Okay. 6.1. For the reaction 2N2O5 giving 4NO2 plus O2 in liquid bromine, N2O5 disappears at a rate of 0.02 mole per dm cube per second. At what rate NO2 and O2 are formed, and what would be the rate of reaction? Now, first of all, for any given reaction, how do you equate the rates with respect to the reactant and the product? For a given reaction, how do you equate the rates with respect to the reactant and the product? So first of all, rate of reaction is defined as the change in concentration of the reactant or product divided by the change in the time taken for that concentration change. So the rate of reaction with respect to N2O5, and I'm talking about the instantaneous rate, will be given as d by dt, that is the change in concentration of N2O5 with respect to time t. Okay? And since it is reactant जिसका concentration goes on decreasing with time, it needs to be taken with a negative sign. Similarly, for the products, the rate of concentration, the rate of reaction will be the change in concentration of the product per unit time, d by dt of NO2. And oxygen के लिए it will be dO2 by dt. These are the individual rates with respect to the reactant and the product. So the funda is for the reactant, you need to write the rate with a negative sign, and for the product, you need to write with a positive sign. The sign simply indicates that the concentration for the reactant goes on decreasing and for the product goes on increasing. Now, if I want to equate the rates, then I need to take the reciprocal of the stoichiometric coefficients. Matlab, here to equate the rates, I need to take 1 by 2 for N2O5, 1 by 4 for NO2, and this will be just as it is, 1 by 1. So this is how you write the rates of reaction with respect to the reactant and the product. For equating them, take the reciprocal of the stoichiometric coefficients. Now, the information given is N2O5 disappears at a rate of 0.02 mole per dm cube per second. मतलब given data में the rate of disappearance of the reactant, that is minus d N2O5 by dt, the value is given to be 0.02. And rate का unit क्या होता है? Concentration upon time. Concentration is mole per unit volume and time is second inverse. ठीक है, तो रेट्स और उसके यूनिट्स को भी ध्यान में रखो. अब आपसे क्या पूछा है? At what rate NO2 and O2 are formed? So now equating N2O5 with NO2, the rate of formation of NO2, which is d by dt of NO2, would be equal to minus 1 by 2 into 4 d N2O5 by dt. So I've just taken this 4 on the other side, and this will become 4 by 2, which is rise of d N2O5 by dt. Finally, it will be 2 times. Now the value which is given is already the consumption या disappearance का rate. मतलब negative dN2O5 by dt का value दिया है. So it will be 2 times 0.02, which will be equal to 0.04 molar per second. Mole per dm cube per second, या उसको आप molar भी लिख सकते हो. So this is the first part. And same lines पे d by dt of O2, the rate of formation of the oxygen, will be equal to minus 1 by 2 into dN2O5 by dt. Okay, so once again it will be half of minus dN2O5 by dt का value 0.02 है, and this will be equal to 0.01 molar per second.
This is how you are going to solve for the boards. ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट जहां पर रेट ऑफ NO2 एंड O2 का फॉर्मेशन हमने फाइंड किया. अब one more thing they have asked is rate of reaction. So rate of reaction you can find out with any of this equation. Rate of reaction with respect to any reactant or product आप ढूंढोगे तो वो equal ही रहने वाला है. अब कोई भी उठा लो, जैसे मैंने 1/4 DNO2 by dt उठा दिया, तो it will be equal to 1/4 times DNO2 हमने 0.04 find out किया, and that will be equal to 0.01 molar per second. या सिंपली थर्ड इक्वेशन लेते हैं DO2 by dt, तो डायरेक्ट 0.01 ही मिलता, but the fact is the rates of reaction will always be equal, चाहे आप कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के थ्रू फाइंड आउट कर लो. क्लियर? So why is N2O5 minus over there? In the question it's given as rate of disappearance. Disappearance का मतलब its concentration is going on disappearing or decreasing with time. Okay, yes, understood. That is why the given data will be with a negative sign. And याद रखना कि the rates are never negative. इसीलिए रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए इस डिक्रीज के साथ माइनस साइन लिया जाता है, so that the overall rate as a physical quantity is never negative. स्पीड कभी नेगेटिव होता है क्या? It's either No, sir. 80 kmph, 40 kmph. It's never minus 20 kmph. So rate can never be a negative quantity. इसीलिए reactants के साथ वो negative लगाया जाता है, so that the rate will always become positive quantity. Yeah. So the minus of the minus half and the minus of 0.02 get cancelled. हाँ, so 1/2 और minus DN25 dt का value Yeah. 0.02 था ना? Yes, yes, sir. So That's the what I rate was will saying. always be a positive quantity. Okay, sir. Next, write the rate law for the following reaction A plus B giving you P from the following data. Now यहाँ पर they have given concentration of A, concentration of B and the rate in mole per dm cube per second. तो सबसे पहले from the data I don't know about the rate law for this reaction. मतलब the order for A and B is unknown. तो ऐसे केस में how do we write a generalized rate law? Rate law for this reaction can be written as rate equal to K times concentration of A raised to the power I don't know, let's say X, and concentration of B raised to the power I don't know, let's say Y. This is how you write the rate law for any given reaction. And X and Y are called orders with respect to A and B, and the overall order for the reaction will be equal to X plus Y. So basically जब rate law find करना होता है, you are supposed to find the powers X and Y. ठीक है? अब based on the data we can write three equations. मतलब जो rate है for the first data it's 4 into 10 raised to minus 5, which will be equal to K times concentration of A is 0.4 raised to X and concentration of B is 0.2 raised to Y. Same line space second data लिख देंगे 6 into 10 raised to minus 5 equal to K times 0.6 raised to X, 0.2 raised to Y. And third data, I can write 32 into 10 raised to minus 5. Just to keep the power same, 3.2 को 32 लिख दिया. And it will be K times 0.8 raised to X and 0.4 raised to Y. Now you have three equations and two unknowns. You can simply divide it and get the unknowns. मतलब first and second को अगर आप divide करते हो, first and second, then 0.2 raised to y and 0.2 raised to y ये common हो जाएगा, मतलब they will be cancelled off, and what we will get is the value for x, because k is also a constant, it will get cancelled. So if I divide, I will get 4 upon 6 on the LHS, kk gets cancelled, and 0.4 upon 0.6 the whole raised to x.
which is equal to 4 by 6 the whole raised to x. Now equating the indices, 4 by 6 raised to 1 is equal to 4 by 6 raised to x. Therefore, the unknown x is equal to 1. Clear? Yes, sir. एंड सिमिलरली और कोई भी दो इक्वेशन ले लो, x आपको मिल चुका है तो यू कैन फाइंड आउट y. जैसे आई टेक थर्ड एंड फर्स्ट, तो थर्ड डिवाइड बाय फर्स्ट will give 32 divided by 4 as 8 equal to k gets cancelled, and this 0.8 upon 0.4 will be 2. Can I write directly 2 raised to x? Yes, sir. But x is already given as equal to 1. Yes, x is not given, we have found out Yeah, we found that as 1. 1, and this 0.4 upon 0.2 will become 2, so this will be 2 raised to y. Up this 2 will get divided over here, so I will get 4 equal to 2 raised to y. Up 2 ka what power gives you 4? 2. So 2 4 is raised to nothing 2. but 2 square equal to 2 raised to y. Equating the indices, I will get y is equal to 2. Okay, therefore, the rate law for this reaction is rate equals to K into concentration of A raised to 1 and concentration of B raised to Y, which is equal to 2. And order of the reaction पूछा नहीं है, but in case they ask order of the reaction, it is sum of the stoichiometric coefficients to which the concentration terms are raised in the rate law equation, which is equal to 3. These are the two important things which we have derived from the experimental data. So order जो है, that's an experimental quantity which can be found through the experimental data. Understood. Next, for the reaction given, let's write the reaction first. It is twice of NOBr, which will break down to give twice of NO2 and Br2. The rate law is rate equals to K times NOBr the whole raised to 2. So now the rate law is already given. So from this, what information do you get? Order of the reaction 2. Correct. It's a second order reaction. Rate law already दिया हुआ है, मतलब it is a second order reaction. Now, if the rate of the reaction is given, when the concentration of NOBr is given, what would be the rate constant for the reaction? रेट दिया है, concentration of NOBr दिया है, rate constant क्या होगा वो ढूंढना है. Rate Substitute just the constant values. is equal to simply the ratio of rate to the concentration of NOBr the whole raised to 2. ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड करके यू विल गेट द आंसर, दैट इज नॉट एन इश्यू. अब मेन पॉइंट क्या है, के का यूनिट. The unit of rate constant depends on the order of reaction. Rate constant का unit is variable. It depends on the order, मतलब the power to which the concentration term is raised. And in general, the unit of the rate constant is represented by molar raised to 1 minus the order second का inverse. Molarity raised to 1 minus the order and second inverse. और टाइम अगर मिनट में दिया है तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, आवर्स में दिया तो आवर्स में हो जाएगा, बट टाइम जनरली इन सेकंड्स ऐसा यूनिट में लेते हैं, इसलिए सेकंड इनवर्स दिया है. तो अब इस केस में इफ द ऑर्डर इज 2, व्हाट विल बी द यूनिट? Per mole per second. मोलैरिटी का इनवर्स एंड सेकंड का इनवर्स, पर मोल पर सेकंड. या फिर इस मोलैरिटी को अगर मैं ओपन अप करूं तो आई विल गेट मोल का इनवर्स dm raised to 3 and second का इनवर्स. इट्स वन एंड द सेम. Yes, sir. अंडरस्टूड ना? मोल dm raised to -3 का -1 करोगे तो मोल का इनवर्स आएगा और dm raised to 3 हो जाएगा. That's what I've Yes, written. sir. ठीक है, सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जहां पर रेट लॉ दिया है, उसमें रेट एंड कॉन्सेंट्रेशंस आर गिवन, यू हैव टू फाइंड द रेट कांस्टेंट, बट फाइनली द यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
like this. For the reaction 2A plus 2B giving 2C plus D, if concentration of A is doubled at constant B, the rate increases by a factor of 4. A को डबल किया तो रेट 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब the concentration of A is raised to 2. 2. A को डबल किया तो ये 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब 2 raised to what power gives you 4? 2. 2. 2. That's why the order with respect to A is 2. If the concentration of B is doubled with A being constant, the rate is doubled. अब B को डबल किया तो रेट भी डबल हो रहा है, इसका मतलब B is 1. directly proportional and B is 1, मतलब the rate law for this reaction is K times A raised to 2 and B raised to 1, the total order of the reaction being equal to 3. third order reaction. To write the rate law, this was the first part. Up, the rate constant of the reaction at 25 degrees Celsius is given, yani the rate constant K is given. What is the rate of the reaction when A is 1 mole per dm cube? ये सेकेंड इनवर्स नहीं आएगा, गलत है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट इज ओनली मोलैरिटी. तो Yes, अब sir. थ्रू दिस रेट लॉ k times a raised to 2 and b raised to 1, 1. we are asked to find the rate. तो simply Rate. rate constant 6.25 substitute कर दो. Hmm. Look at the unit. What is the unit? Mole in 2 inverse. Raised to 2 So inverse. raised to -2 indicates that it's a third order reaction, right? क्योंकि जब हम 1 - 3 करेंगे तो ये -2 मिलेगा कि नहीं. हाँ sir, yeah, yes. तो कई बार एमसीक्यू में रेट कांस्टेंट का आपको वैल्यू दिया जाता है और डायरेक्टली पूछते हैं ऑर्डर क्या है. सो रेट कांस्टेंट का यूनिट के थ्रू यू कैन डायरेक्टली फाइंड द ऑर्डर. इट्स एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन व्हिच कुड बी आस्क्ड, प्लीज नोट इट डाउन. Yes, sir. रेट कांस्टेंट का यूनिट गिव्स यू द आइडिया अबाउट द ऑर्डर. के Hmm. का यूनिट गिव्स यू द आइडिया Or, अबाउट द ऑर्डर. Into yeah. this will be 1 का square and this will be 0.2. तो ये हो जाता है 13.5, तो 1.35 molar per second would be the answer. Yes, sir. Next, for the reaction given, the rate law is K times NO raised to 2 and H2 raised to 1. Once again, क्या information मिला? Order is 3. Perfect. It's a third order reaction. So what is the order with respect to NO and H2? So With NO respect is to raised to NO. 2 and H2 is raised to 1. And overall order is 3. खत्म हो गया. That's it. 1 mark question. Yeah. Oh, Now okay. these type of questions could be asked in the 1 mark वाला part. जो 8 marks वाला आपका है ना section, first section A, Yes, sir. उसमें this type of questions could be asked. Oh, okay. Cool. Like this, the reaction chloroform and chlorine giving carbon tetrachloride and HCl is first order in chloroform and half order in Cl2. Write the rate law and overall order. So since we shouldn't keep it in ratio, can we multiply it by 2? No, 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 no. Powers you can't multiply by 2, बाबा. ये आपका Okay, पावर है, एक्सपोनेंशियल पावर है. okay, okay. ठीक है. सो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म इज फर्स्ट ऑर्डर एंड क्लोरीन इज हाफ ऑर्डर. तो रेट लॉ तो ये हो गया. एंड Hmm. ओवरऑल ऑर्डर वुड बी इक्वल टू व्हाट? Ha, 1.5. 1 प्लस हाफ. 1.5 इज 1.5 या 3/2. तो यहाँ से ये भी समझता है कि ऑर्डर जो है इट कैन बी जीरो, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी फ्रैक्शनल एंड इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. In fact, order can take all the values: 0, integer, fractional, and even negative. Negative order का मतलब ये होगा कि as the concentration increases, the rate will decrease.
ये नेगेटिव ऑर्डर में इनवर्स हो जाएगा, राइट? So can you repeat that part? If the order is negative, let's say I write rate equal to k into a raised to -1, तो order क्या है? -1. That's a negative order. तो इसका मतलब can I write k upon a? Yeah, So how do you see rate and concentration now? inversely That's it. So if the concentration increases, the rate will. decrease. That's the significance of a negative order reaction. Okay. Yeah, understood. Fine. It can be both. It Yeah. can be either directly proportional to concentration if it's Hmm. positive, and inversely if it's negative. Okay, understood. Perfect. Next. Consider a reaction A plus B giving you the products. A plus B giving you P. If the concentration of A is doubled with B being constant, the rate of the reaction doubles. तो यहाँ स्टेटमेंट से अगर A को डबल किया B कांस्टेंट रख के तो रिएक्शन भी डबल होता है, मतलब It's one first order. फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A. Yes. If the concentration of A is tripled and that of B is doubled, the rate increases by a factor of 6. Up, if you see it individually, when A is tripled, what will happen to the It'll reaction? become 3 times more because it's Three times. first order, na? Perfect. तो जब A को ट्रिपल किया तो रिएक्शन रेट भी ट्रिपल होगा. अब उसके साथ B को डबल किया तो So that रेट means B is ओवरऑल. 3/2. नो 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 नो. B is doubled. See, A को ट्रिपल किया है और B को डबल किया है. So if हाँ, both are assumed to be first order, then 3 into 2, the reaction rate will increase by a factor of 6. 6. तो इसका क्लियर मतलब है कि अगर इसको ट्रिपल किया तो ये ट्रिपल हुआ और B को डबल किया तो if this order is 1, then only it will become 6 times ना. Oh yeah, so it's multiplication or addition. Yeah. Okay. हाँ, एडिशन नहीं है. Yes sir, yes sir. ठीक है. Correct. अब बोर्ड्स में ये तो ओरली समझ में आ जाता है कि दोनों का ऑर्डर 1 है और ओवरऑल ऑर्डर 1 + 1 2 है. ठीक है. लेकिन बोर्ड्स में लिखने के लिए आपको एक फ्लो फॉलो करना पड़ेगा कि राइट लेट द रेट लॉ ऑफ दिस रिएक्शन बी. कैसे लिखेंगे जनरलाइज रेट लॉ इफ आई डोंट नो द ऑर्डर? K is equal to A raised to X and B raised to Y. रेट इक्वल टू k इंटू ए रेस टू एक्स एंड बी रेस टू वाई. ठीक है. ये हमारा रेफरेंस रेट लॉ है. अब देखो फर्स्ट डेटा क्या बोलता है. इफ a इज डबल्ड विद b बीइंग कांस्टेंट, तो आई विल डबल द a, मतलब ट्वाइस ऑफ a रेस टू x एंड b को कांस्टेंट रखा तो b रेस टू y. तो रेट डबल हुआ तो 2 इंटू रेट. समझा? Yes sir. अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि a को ट्रिपल किया सो दिस विल बिकम 3a रेस टू x और b को Hmm. डबल किया तो 2b रेस टू y. तो Yes. रेट क्या हो रहा है? 6 टाइम्स हो रहा है. Hmm. ठीक है. तो हमने स्टेटमेंट्स के थ्रू रेट लॉस के 3 डेटा को रिप्रेजेंट किया. अब जस्ट यू डिवाइड एंड यू गेट द x का वैल्यू, यू विल गेट 1 एंड y का वैल्यू आल्सो यू विल गेट 1. therefore the rate law for this reaction, are you getting it? So how should we divide exactly? Just one upon each other like normal, na? हाँ, मतलब देखो फर्स्ट और सेकंड डिवाइड करोगे क्या उड़ रहा है? व्हाट इज गेटिंग कैंसल्ड? B is getting cancelled and K. व्हाट विल यू गेट? So I'm getting 2A raised to X is equal to 2. हाँ, रेशियो. Yeah. तो 2 raised to x equal to 2, मतलब 2 raised to x equal to 2 raised to 1. Comparing the Yeah. indices, you will get x equal to 1. Yes sir. बस वैसे ही करना है. ठीक है. समझा? जैसे जैसे ये इक्वेशन किया ना हमने यहाँ पर, ये वाला 3 हाँ. है, 2 अननोन्स है, डिवाइड करो Okay. आपको Yes sir. x Yes मिलेगा sir. y मिलेगा एंड देन रेट का मिल जाएगा. बस वही फॉलो करना Okay. Okay sir. है. बट बोर्ड्स के लिए दिस इज द वे यू हैव टू रिप्रेजेंट योर न्यूमेरिकल फॉर 2 मार्क्स. Okay sir. ठीक है. वैसे तो ओरली समझ में आता है कि a डबल किया रेट डबल हुआ तो a इज रेज टू 1.
इसको ट्रिपल किया, इसको डबल किया और 6 से बढ़ा, तो यहाँ पर ये दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर में है, मतलब वी विल कंफर्म गेट इट x equal to 1 and y equal to 1 for the data. Yes, sir. ठीक है, तो रेट लॉ पूछा था एंड द ओवरऑल ऑर्डर पूछा था। ये सब फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जहां पर रेट लॉ के थ्रू आपको अलग अलग चीजें फाइंड करनी होती है। Okay. So I think you missed 6.5. That was similar, that's why I'm not taken. Oh, okay. A reaction occurs in the following steps. So two reactions are given. Write the equation of overall reaction, rate law and intermediate. Now यहाँ से reaction intermediate, RDS, order, molecularity, ये सब मैं एक ही equation के through revise करवा रहा हूँ, ध्यान दो. So a particular reaction is given in 2 steps. Now जब एक reaction के multiple steps दिए जाते हैं, all the individual steps are called elementary reactions. Called what? Elementary reaction. Elementary reaction. Elementary matlab those reactions which cannot be further broken Simplified. down. Elementary matlab those reaction which cannot be further broken down. Simplified. Broken down. Simplified you can say. ठीक है, तो अब जब एक रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप्स में तोड़ा है और उन इंडिविजुअल स्टेप्स को तोड़ नहीं सकते हैं, तो दोज रिएक्शन का स्टेप्स आर कॉल्ड, वंस अगेन क्या बोलते हैं? Elementary step. एलिमेंट्री स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन. Up when the multiple steps are given and if I add them together, I will get the net reaction or the overall reaction. Up to add up the reaction, whatever is common part that will be getting cancelled off. So can you see something common in the reactant and the product side for the two equations? Yes, so on the product side, NO2F is there. NO2F is appearing on the product side in both the equation, they will get added up. Yes, sir. आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कुछ कॉमन दिख रहा है जो कैंसिल हो सकता है, वो Yes, sir. Fluorine. Fluorine. NO2 भी एड अप हो जाएगा, ठीक No, है fluorine. आपका, Fluorine. या F will get cancelled. So Yes, sir. now ऐसा substance which is first formed and then getting consumed in the consecutive step Is an is intermediate. called an intermediate. A substance which is first formed and then consumed, it will be an intermediate. और दूसरा जो सब्सटेंस पहले पार्टिसिपेट करेगा एंड देन टुवर्ड्स द एंड रीजनरेट होगा, दैट वुड बी कॉल्ड Catalyst. कैटलिस्ट. मान लो यहाँ पर कोई सब्सटेंस सी है जो यहाँ पर वापस रीजनरेट हुआ, तो सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड एंड देन रीजनरेटेड वुड बी कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट. यहाँ पर नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैंसिल करोगे इंटरमीडिएट होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैंसिल करोगे दैट वुड बी अ कैटलिस्ट. दैट सिंपल डिफरेंस बिटवीन कैटलिस्ट वर्सेस इंटरमीडिएट. पॉइंट 1. ठीक है, now when I add up the reaction I get 2NO2 plus F2 giving twice of NO2F. ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ओवरऑल रिएक्शन. सेकंड, write down the rate law. Now for a multi-step reaction, the rate law is always determined by the Slow slowest step. step of the reaction. And this slowest step of the reaction is called RDS. rate determining step. So the rate is determined by the slowest step of the reaction, which is called RDS. And in the RDS, whatever stoichiometry you see for the reactant, that is your rate law. Hence, the rate law from the RDS is written as K times NO2 raised to 1. and F2 raised to 1. 1. This is your rate law. Point 2, second part. अब थर्ड पार्ट में इंटरमीडिएट पूछा है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. सो इंटरमीडिएट इज इक्वल टू F. Got it? Now I will also discuss about molecularity.
Molecularity is defined as the number of molecules which come together and collide with each other to initiate the reaction. Molecularity is the number of molecules which come together and collide with each other to initiate a reaction. The molecularity एक theoretical concept है, it's not an experimental concept. Order is experimental, molecularity is theoretical. So now, just by looking at the reaction, individual reaction, whatever number of molecules you observe, that will be molecularity. So यहाँ पर दोनों step में देखोगे, there are two molecules which are colliding with each other or reacting with each other. Hence, the molecularity is 2, and we call this reaction to be a Bimolecular. bimolecular Yeah. reaction. तो अब molecularity जो है, it can have only integer values, that is 1, 2, 3, and 3 से ऊपर का molecularity normally या practically कोई reaction में observe नहीं होता है, because more than 4 molecules coming together and colliding with each other would require a very high amount of energy, and that much amount of energy is not available in the initial stage of the reaction. That's why molecularity can be 1, 2, 3. It can be uni, bi, or tri molecular reaction in general or practically. Yes, sir. समझा? Yes, sir. So through this example, the concept of RDS, elementary reaction, overall reaction, writing the rate law, identifying the intermediate, concept of catalyst, and molecularity, everything gets covered up. Clear? Yes, Yes, sir. sir. Next. Now comes the second part of the numericals, which covers the first order reaction related integrated equation and the half-life related numericals. Okay. The first part we talked about rate law and their associated part. Second part is first order reaction, integrated rate equation and the half-life. So let me summarize the two important formulas for the first order. The time for the first order reaction could be calculated as 2.303 divided by rate constant K into log to the base 10 initial concentration upon final concentration. So initial is the amount of the concentration at time T0 and 80 is the concentration of reactant which is remaining or left behind after a time t. कितना गया उसमें we are not interested. कितना बचा हुआ है, what is left behind, that is 80 का value. Always remember that. So if in the numerical they say 30% is decomposed, so what is the 80 value you are going to substitute? 70. 70. So the ratio will be 100 by 70. That's it. ये important. Clear? If they say Yes. concentration reduces to 25%, So that means it's 100 upon 25. reduces to 25 मतलब 25 ही बचा हुआ है तो 100 by 25 होगा. बट अगर बोला reduces by 25%, by 100 by 75. तो अब बचा हुआ 100 minus 25 होगा. तो 2 मतलब it is as it is because that gives you remaining amount, and by बोला इसका मतलब you have to subtract it from 100 and take it the remaining amount as 100 minus the amount given. Understood? Yes, sir. Okay. Now let's understand the numerical. अच्छा, और एक चीज इसके बाद जो half life का equation which was derived was T half for a first order reaction is equal to 0.693 upon K, which is always constant for a first order reaction, meaning it does not depend on the initial concentration. T half is independent of initial concentration. Fine.
Yes, sir. Okay. The half-life of a first order reaction is 990 seconds. T half is given. If the So initial concentration of the reactant is 0.08, क्या है ये? initial. So A naught. A naught. What concentration would remain? You have to find 80. 80. After T is equal to 35 minutes, 35 which minutes, you have which to is the convert to time. seconds. Yes. अब टाइम को जनरली ध्यान रखना, अगर आपका हाफ लाइफ सेकेंड्स में है और ये टाइम मिनट्स में है, then the first step would be to convert the minute into seconds. It will be 35 times 60. ये कन्वर्जन नहीं बोलना, ठीक है? Yes, sir. So up, we will use the integrated rate equation for a first order reaction, which is T equal to 2.303 upon K. Now, instead of K, I'll just substitute in terms of half-life so that I can substitute the half-life, because आपको यहाँ पर half-life दिया है instead of K. So what I did, I just clubbed up the two equation and K की जगह I substituted 0.693 by T half into log to the base 10 A naught by 80. Now 80 जो है, you have to find it which is under the log. तो क्या करोगे? Bring it all to one side. Yes. Take it log on one side, that is log of A naught by 80. Do not substitute anything here and solve the remaining part. Matlab T times 0.693 upon 2.303 and T half. अब अगर ये याद है कि 2.303 और 0.693 directly goes as 0.3010, log 2 है ये. While deriving we have seen this. याद है तो बेटर, नहीं है तो log से तो कर ही सकते हो. तो फाइनली जो टाइम दिया है दैट इज 35 टाइम्स 60 into 0.3010 and the half life given is 990. 3 2s are and 3 33s are, so this will be 70, or अगर मैं 10 यहाँ शिफ्ट कर लूँ तो I will get 3.010 divided by 33. On this much you can do through the logs. ठीक है? Yes, sir. After solving, let's say you get a value as x. So next step क्या करोगे to eliminate the log? Anti-log. Take the anti-log. So a naught by 80 का ratio will be equal to anti-log of whatever value you have calculated, and let's say ये आया y. So So basically, so finally, anti-log of x will be actually the log का whatever product we get, right? नहीं, यहाँ पे जो solve करोगे ना उसका जो value आएगा उसका anti-log लेना है. So it will be anti-log of log of this. Because to Oh, get okay, the okay, value yes, for sir, yes, sir. this, Yeah, yeah, एक बार understood. एंटीलॉग लोगे ना, Hmm. समझा? तो this x is actually antilog of the value which is to be calculated. समझा? Okay, sir. So अब जो भी एंटीलॉग ऑफ x आया वो y का वैल्यू you will substitute for the RHS and 80 will be equal to a naught upon y. स्टेप वाइज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जस्ट आराम से एक एक स्टेप को करो. न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है टू गेट द करेक्ट आंसर, एंड यू विल गेट द कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी या मोल पर डीएम. अंडरस्टूड? Yes, sir. Next, in a first order reaction 60% of the reactant decomposes in 45 minutes. 60% decomposes means 40% remaining. 40% is remaining. so the initial will be taken as percentage 100, so the 80 will be equal to the remaining 40. Bas.
So आपका time यहाँ पर 45 minutes दिया है. Now even if you don't convert the minutes into second, it's okay because जो भी half life आपको यहाँ पर मिलेगा वो भी आपका minutes में आएगा. ठीक है, तो नहीं करोगे Okay, तो sir. भी चलेगा, करोगे तो भी चलेगा. Now once again, what I'll do is take this two equation and now in the same equation I have to find the half life. ये वाला ढूंढना है, right? Yes, sir. So T is equal to 2.303 upon 0.693 into the T half into, पहले log को आप solve कर लो अलग से. तो log अपना है A0 by 80 which is 100 by 40. Yes, So sir. hashtag log of A0 by 80. So why जब भी actually should we do the log? We already know it will be 2.5 ना sir. हाँ मतलब यहाँ तो ये सिंपल वाला है. मैं हाँ, जस्ट आपको इसलिए. एक स्टेप वाइज बता रहा हूँ मेथड, बिकॉज जनरली अगर वैल्यूज कुछ आड़ा टेढ़ा है तो उसको सेपरेट करके आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो. Yes, sir. ठीक है, Okay. तो दिस विल बी 100 by 40 which is 10 by 4 which is equal to log of 2.5. Now find the log of 2.5 और जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे. Okay, sir. ठीक है, so now the T half is to be found which will be equal to T into 0.693 upon 2.303 और जो भी log 2.5 का वैल्यू आया वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा and you will get the answer in minutes. Understood? Yes, sir. So can we just go back to the previous one and can we solve that anti-log bit? Okay, tell me the values for the logs then. This will be 0 point, 0 point and 1 point. Yes, sir. 0 point of 70 का 0, 7 का log मतलब 70 का 0 you'll find ना. yes, sir. 8451. 8451, okay, and 30 का 1 का 0. So it's 4786. And 33 का 0. 5185. So follow with the format, it would be easy. यहाँ पे 7, 8 and 5 13, 8 and 4 12. This will be 13 and 1 point. So this will be equal to minus 1.5185. And I'll get 7 minus 5 2, 13 minus 8 5, 2 1 minus 1 0, 8, and this will be bar 1. This will be 0 minus 1. In the antilog, you should always take it as bar 1. Yes, sir. Now calculate antilog of 80 का 5 का 2. Antilog of 80 का 5 का 2. 6386. And into 10 raised to minus 1 जब करोगे, this will become 0.6386. Yes, sir. मतलब 7 into 3.010 divided by 33 is this. So now A0 by 80 will be equal to antilog of this. Yani antilog of 0.6386. So now again find antilog 63 का 8 का 6. Okay. 63 का. So 4351. 4351 यानी 4.351, right? So I'm sorry, I left it. 63 का 8 का 6. Yes, sir. 4351. Then finally 80 will be equal to 0.08 A0 divided by 4.351.
ये कैलकुलेटर से कर लेते हैं। अच्छा, okay, thank you, sir. Yeah, thank you. ना? Yes, sir. I just wanted to understand it a little better. हाँ. Thank you. Next, following data were obtained during the first order decomposition of SO2Cl2 at the constant volume. Time and the total pressure in bar is given. Calculate the rate constant of the reaction. अब ये काफी important numerical है. Just pay attention. As of now, we had the formula to find the rate constant when the concentration of the reactants initial and after a time t was given. But now the time versus the total pressure is given. अब यहाँ पर हमें total pressure नहीं चाहिए. We want the pressure of the reactant only. Because ध्यान रखना ये जो formula है integrated rate equation का, this one, this only deals with the concentration or अगर pressure दिया है तो pressure of the reactants initial and after a time t. मतलब अगर टोटल दिया है तो इट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, हमें प्रोडक्ट का नहीं चाहिए डेटा. तो ऐसे सिचुएशन में वी हैव टू फॉलो अ मेथड बाय व्हिच वी विल गेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट इनिशियल एंड आफ्टर अ टाइम t. कैसे? लेट्स सी. We have SO2Cl2, which is sulfuryl chloride, decomposing into SO2 and Cl2. Let the initial pressure at time t equal to 0 be P naught. Reactant का initial pressure be equal to P naught. Initially, products of pressures will be 0. Now, after a time t, let the amount which is decomposed of the reactant be equal to P. तो यहाँ पर stoichiometry 1 ही है दोनों का, तो अगर ये P लिया तो even this will be equal to P. Yes, sir. And now, if P amount of the partial pressure is lost, how much is remaining? P naught minus P. So delta P. P naught minus P. ठीक है? So P naught is the initial pressure and P naught minus P is the final pressure. अब Yes, sir. time t equal to 0 पे total pressure कितना है? Total is sum of all the partial pressure. Yes, sir. कितना है? Time t equal to 0 पे. So P naught, which is it's given, right? 0.5. Yes. मतलब P naught की value I can get directly 0.5 bar. Yes, sir. And after time t, यानी after time of 100 seconds जो उन्होंने दिया है, total pressure मतलब तीनों का ऐड करेंगे. हाँ. कितना आ रहा है? P total is 0.6. So it will be this... P naught minus P naught plus P. P naught plus P. That is given to be 0.6. Yes, sir. अब उसमें से आपको P naught पता है. हाँ. तो P will be equal to 0.6 minus P naught, which is 0.5. So 0.6 minus 0.5, 0.1. So we have now got P naught and P values. अब जैसे मैंने बोला था, to substitute in the rate constant का formula, we require only reactant का data. ये reactant है. तो reactant में अब initial pressure कितना है? Initial is 0.6, 5. 5. And the amount which is remaining after time t, that would be P naught minus P, which is how much? 0.4. Perfect. That's it. ये था आपका numerical. 2.303 upon t log to the base 10. Instead of the concentration now, I should write P naught upon P naught minus P. समझा? Yes, sir. Yes, sir. Now this will be 2.303 upon 100 seconds into log to the base 10. 0.5 upon 0.5 minus 0.1 यानी 0.4. 5 by 4 cancel करो, 1.25 log की value डालो and multiply by 2.303 by 100.
you get the rate constant. And the unit will be only per second, क्योंकि ये first order दिया है ना, हाँ first सर. order का unit होता है second inverse. Once again, rate constant का unit बहुत important है. So समझा? in the textbook they've done a different way. I didn't understand that one. Huh? Just follow this method. It is Yeah, simple. this makes it a little more simpler. Yeah. So Okay. initial upon the final, just take the ratio and then you're through with the formula. Yes, sir. Okay, now comes the third category of numericals, which is related to Arrhenius equation. Arrhenius equation, which relates the activation energy and temperature and the temperature dependence of the reaction rates. तो सबसे पहले Arrhenius equation in the exponential form was given as rate constant K is equal to A into e raised to minus EA by RT. Rate constant is equal to A times e raised to minus EA by RT, where A is called Arrhenius factor or pre-exponential factor or frequency factor. Remember the three names. A is Arrhenius factor और exponential के पहले है तो pre-exponential factor or also called frequency factor. And importantly, A has the units same as K because आगे का term unit exponential है ना, तो unit same as K. Very very important. आगे Yes, sir. बढ़ते हैं. E raised to minus EA by RT में EA is the activation energy, R is the gas constant and T is the temperature in Kelvin. अब Arrhenius equation का importance क्या था? It gives you the relation between the rate constant and the activation energy and also the temperature. And the conclusion was, as the activation energy, which is the potential energy barrier, increases, जितना activation energy ज़्यादा रहेगा, उतना the rate of the reaction will be Faster. नहीं. EA is the potential energy barrier. तो जितना बैरियर ज्यादा होगा उतना डिफिकल्ट होगा रिएक्टेंट्स Yes, को sir. Yes, कन्वर्ट sir. करना इनटू प्रोडक्ट्स. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर. बैरियर मतलब हिंड्रेंस है, जितना हिंड्रेंस ज्यादा उतना रिएक्शन स्लो. ये बड़ा होगा तो रेट कम होगा. Okay, sir. एंड जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेट विल डेफिनेटली गो ऑन. भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स विल गेट एक्टिवेटेड and because of that more reactants will be converted to products, thereby the rate will increase. यही तो Arrhenius का important conclusion था. अब न्यूमेरिकल्स में इसके दो इक्वेशंस है which is very important. If I convert this into logarithm form, I get log of k to the base 10 equal to minus EA by 2.303 RT plus log of A to the base 10. तो अगर एक ही टेम्परेचर मेंशन किया है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो, एक ही टेम्परेचर मेंशन किया है तो यूज द फॉर्मूला नंबर 1 एंड उसमें either the rate constant, activation energy, temperature or the Arrhenius factor could be asked to found. फॉर्मूला एक ही है लेकिन अलग अलग वेरिएशन है डिपेंडिंग क्या ढूंढना है. एंड इसी इक्वेशन को लेकर we derived a equation for temperature dependence of reaction rates. So that was log of K2 by K1 to the base 10 equals to E upon 2.303 are common. ये इस ग्राफ का स्लोप भी है, E upon 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2
with the temperature T2 should be selected greater than T1. These There's are no the plus two log A. equations. नहीं, because जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, log A दोनों में से कैंसिल हो जाता है. You take one time log K1 and then T1 और दूसरा इक्वेशन log K2 लो और यहाँ पे T2 लो. ये डिराइव किया है ना. Then when you subtract, the log A and log A gets cancelled. मैंने अभी Okay. डिराइव नहीं किया है, ये डायरेक्ट Okay. फॉर्मूला Okay. है. ठीक है. Yes, तो sir. मेन यही है, the exponential form which we are not going to use for the numericals. इसी exponential को logarithm फॉर्म में कन्वर्ट किया and then दो अलग टेम्परेचर पे कंपेयर किया. बस मेन फंडा क्या है इस इक्वेशन का, कि ये अगर ज्यादा होगा तो रेट कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा होगा. Okay, sir. अब look at the numerical. The rate constants for a first order reaction are 0.6 per second at 313 Kelvin and 0.045 per second at 293 Kelvin. What is the activation energy? K1 is 0.6 and K2 is 0.045. Correct. तो सबसे पहले यहाँ पर पहला ऑब्जर्वेशन, हाउ मेनी टेम्परेचर्स आर गिवन. 2. So second formula. बस. और उसमें हायर टेम्परेचर ऑलवेज इज टेकन एज T1. गड़बड़. Oh, yes, sir. अगर Sorry. T1 लिया तो आपका यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली वहां पर कंडीशन लिखा है, T2 सिलेक्ट Sorry. शुड बी ग्रेटर ऑलवेज. तो ये T2 है, ये T1 है, तो इसका जो रेट कांस्टेंट है दैट वुड बिकम K2 एंड दिस विल बिकम K1 एंड द EA इज टू बी फाउंड हियर. Okay, sir. तो वैल्यूज का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. Now, from the formula, K2 by K1 will give me a ratio 0.6 upon 0.045 equals to EA ढूंढना है upon 2.303 into R. What is R value in joules? 8.314. 8.314 into 1 by T1. T1 293. minus 1 by 313. Yes, sir. now इस लॉग को आप अलग से सॉल्व करो. मान लो इसका वैल्यू आपका x आया. ठीक है, तो EA का कैलकुलेशन नाउ वुड बी इक्वल टू whatever is the value of this x into 2.303 into 8.314 into इसका जब LCM लेंगे तो what is the difference you get? LCM समझता है ना, 313 minus 20. 293 20. 20. ठीक है, तो ये LCM में 293 और 313 ऊपर चला जाएगा और जो 20 है वो नीचे आ जाएगा. This log term is x into this into this into this into this and divide by Yes, the sir. difference which I'm getting 20. बस ये solve कर लो and you will get the Yes, sir. activation energy in joule per mole. Remember the unit once again, unit बहुत stress कर रहा हूँ, ध्यान देना. Numerical solve करने के बाद without unit is marks getting deducted. Half mark, right, sir? Yes. Okay. Understood. Up next, a first order gas phase reaction has activation energy. Activation energy मतलब EA is given. देखो यूनिट किलो जूल पर मोल, बट स्टैंडर्ड यूनिट जूल पर मोल है. मतलब Yes, द sir. वैल्यू So टू बी सब्स्टिट्यूटेड वुड बी 240 into 10 raised to plus 10 raised to 3. 1000 or 10 raised to 3. अब if the pre-exponential factor is given, what is pre-exponential factor? Pre-exponential factor. A. भाई बोला ना प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए के तीन नाम है, आरहेनियस फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर. तो ये वैल्यू ए का है. व्हाट इज द रेट कांस्टेंट यानी के.
at 600 Kelvin यानी T. अब how many temperatures are given? Just one. Use the formula number. First one. So that was log of k to the base 10 equals to minus A by 2.303 RT plus log of A. नहीं याद रहता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखो एंड देन उसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करो. 2 स्टेप में ये डेरिवेशन हो जाता है. इफ इन केस यू फॉरगेट, तो याद करो कि फॉर्मूलाज कैसे डिराइव किया था. तो कहीं पे अगर आप भूल जाते हो तो आप 3-4 मिनट में उसको एटलीस्ट डिराइव करके सॉल्व कर सकते हो रादर देन जस्ट स्किपिंग द न्यूमेरिकल ऑल टुगेदर. तो डेरिवेशन भी ध्यान रखो तो इट विल बी हेल्पफुल इन केस यू फॉरगेट द फॉर्मूलाज. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन में आपको क्या ढूंढना है K. कि जो लॉग के अंदर है, Yes, sir. मतलब पूरा RHS आप सॉल्व करो एंड देन टेक द Antilog. एंटीलॉग. लेकिन पूरा RHS में 2 पार्ट्स है, तो क्या करने का, हर एक पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व करने का. यानी सॉल्व EA by 2.303 RT, सॉल्व log of A डिफरेंटली. Yes, sir. ठीक है, मान लो इसका वैल्यू x आया और इसका वैल्यू y आ गया. So तो अब नेक्स्ट antilog of स्टेप x plus में y. minus x plus y because I have not taken this minus. मतलब log k to the base 10 will be minus of x plus y. तो ये जो वैल्यू मिलेगा y minus x होगा. तो k will be equal to antilog of whatever value y minus x का आया वो. And the answer you will get in second का inverse. क्योंकि k का यूनिट किसके बराबर होता है? k का यूनिट Odd. हाँ नहीं भाई, तुम लोग ध्यान रख रहे हो कि नहीं? k का यूनिट्स a के बराबर ही होता है. तो अगर क्वेश्चन में ए का यूनिट्स दिया है ना तो उससे समझ में आता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर है. वैसे तो देकर रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर नहीं दिया होगा तो जो भी ए का यूनिट्स है कॉपी पेस्ट करो, आपको के का यूनिट सेम ही मिलना है. अंडरस्टूड? रिमेंबर माय वर्ड्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. Yes, sir. जो डिफरेंट पार्ट्स है उसको अलग अलग हैशटैग करके सॉल्व करो and then Okay, sir. club it to finally get the correct answer. Otherwise सब कुछ यहाँ substitute करोगे, then you have to repeat the steps and it will create a confusion. इसको अलग करो, x ले लो, इसको अलग करो, y ले लो, y minus x करो, इसका एंटीलॉग ले लो, खत्म. बहुत सिंपल हो जाता है अपीयर देखने में. Yes, sir. The half-life of a first-order reaction is 900 minutes at 820 Kelvin. Estimate its half-life at 720 Kelvin if the activation energy is 250 kilojoule per mole. Again, what is the hint? क्या बोला मैंने? 2 फॉर्मूला कैसे सिलेक्ट करना है उसके लिए क्या हिंट दिया मैंने? 2 temperatures are given. खत्म. तो फॉर्मूला नंबर 2. 2 is to be used. बट फॉर्मूला नंबर 2 में हमारे पास रेट कांस्टेंट्स का रेशियो है, बट व्हाट दे हैव गिवन इज हाफ लाइफ. अब मुझे So we बताओ use नाउ half-life इज that 0.693 upon K. करेक्ट. Half-life is तो already given, सिंस so we can find K. नो यू विल नॉट फाइंड के, जरूरत नहीं है. Okay. If there is a ratio, you just take a ratio. Why to find k and then take the ratio? Unnecessary काम बढ़ेगा ना. हाँ, आपका sir. k जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाफ लाइफ से. यस और नो? Yes, sir. यानी जो रेशियो k2 by k1 है, that will be now half life at temperature 1 upon half life at temperature t Yes, 2. sir. Yes, sir. T2. So no need to find k over here. Whatever is Okay. the half life का ratio, that will be k का ratio but inverse. अब आपका नया फॉर्मूला आ जाता है log k2 by k1 की जगह t half of
first one upon T half of the second one. First upon second, EA upon 2.303 into R into 1 by T1 minus 1 by T2. ये है second equation for the temperature dependence. Again, याद नहीं रखना है, खाली inverse proportion है, बाद में reverse कर. Yes, sir. Up once again, 820 will be selected as T2, 720 will be. T1. So T2 पे जो half life दिया है, that is T half of. The second one. And estimate जो करना है, that is T half of First one. first one. तो अगेन T half of first one log के अंदर है, log के अंदर है. तो जब भी log के अंदर कुछ रहेगा तो solve the RHS. and then take the Antilog. and then multiply the T half 2 का value. Yes, sir. समझा? Yes, sir. मतलब your values would be 250 into 1000, 250 kilojoule दिया है, upon 2.303 into 8.314. Then take the temperature का difference which is 100 upon 720 into 820. Yes, sir. यहाँ पर 1 0 2 0 और यहाँ 1 0 2 0 गायब, वापस 1000 बच जाएगा. So I can write this as 250 into, या फिर इसको ले लेते हैं हम 25 into 10 raised to 4 upon 2.303 into 8.314 into 72 into 82. ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व करोगे आपको x मिलेगा. Then T half of 1 upon ये वैल्यू 900 दिया है equal to antilog of x. करेक्ट. Yes, sir. And then जो भी वैल्यू antilog of x का आया उसको 900 से मल्टीप्लाई करो. Yes, sir. Understood. And you will get the time in minutes. Okay. ठीक है, once again बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप जितना सॉल्व करोगे उतने आपके न्यूमेरिकल्स में एरर्स होने के चांसेस कम है. Yes, sir. Okay, and take care about the numericals because जितना न्यूमेरिकल्स में कॉन्फिडेंस रहेगा उतना it's better to score the marks. The chances of Yes, sir. scoring high marks is higher. Yes, sir. That's it.